हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग डाटा टाइप से रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं एंड हम Mitsubishi GX Works3 में लीडर प्रोग्रामिंग में हम स्ट्रिंग्स डाटा टाइप्स कैसे यूज कर सकते हैं एंड हाउ टू रिट्रीव डाटा टाइप्स like one words and two words from. So let's start the video. First of all, here I need to add one POU. First click add new data types and here simply define your folder names. This is your data types like program, and here you can mention like demo ones, and this is your header file. Like this is your header file and this is your subheader. So this is your programming language, like which language you want to use, like HTA, PRT. तो here मैंने अभी यूज 6 लेडर ही सिलेक्ट कर रखा है एंड डाटा टाइप आपका फंक्शन ब्लॉक से। यहाँ पर भी आप इसको आईजे आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ। ओके, अभी हमारे पास नया प्रोग्राम खुल गया। अब हम इसमें अपना प्रोग्रामिंग करने वाले हैं कि हमें स्ट्रिंग डाटा टाइप्स को कैसे यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो SM400 होता है ऑलवेज ऑन, लाइक इसे मेमोरी बिट्स। यहाँ पर मैं एक PM 100 मेमोरी बिट, सॉरी 1M20 एक टेम्परेरी, यहाँ पर इसको कमेंट बिट टेम्परेरी बिट्स इसको मेंशन कर देता हूँ। सपोज आपको यहाँ पर एक हेडर फाइल लिखनी है कमेंट वाइज, तो जैसे सिंपली अगर आप लिखो जैसे लाइक मेन प्रोग्राम, अगर जैसे इसको डायरेक्टली अभी अब आप राइट करने के बाद इंटर करोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस टाइप आपको इधर शो कर दिस इंस्ट्रक्शन आर डिवाइस इज इनकरेक्ट। तो आपको करना है कि इसमें जाना है आपको लेफ्ट साइड में एंड सिंपली आपको एक इन्वर्टेड सॉरी एक सेमी कोलन डाल देना एंड आपको इंटर कर देना। ऑटोमेटिकली आपको एक्सेप्ट लाइक एज ए हेडर फाइल हेडर नेम्स। ओके, अब हमारे पास वो कंप्लीट होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हमें स्ट्रिंग कैसे हाउ टू यूज स्ट्रिंग। तो बिफोर यूजिंग द स्ट्रिंग डाटा टाइप्स आपको कुछ यूनिक सिंबल्स होते हैं, लाइक मित्सुबिशी में आपको एज ए डॉलर सिंबल्स, तो डॉलर यूज करोगे एंड देन अब आपको अभी क्योंकि हम कैन कैट नहीं यूज करने वाले हैं, अभी हम फर्स्ट हम एक मूव करेंगे लाइक डाटा रजिस्टर्स। अब हमारे पास अब हम जो भी स्ट्रिंग में डालेंगे लाइक कभी हम हमें किसी एक में सेव करके मूव कर लेना। लाइक जब हमारे पास कोई हम टेम्परेरी बिट कोई भी एक बिट को हम जब ट्रिगर करेंगे तो इसमें जो हमारे पास लाइक जब यहाँ पर मैं एक से वन मैं इसको मूव कर दूंगा किसी भी एक डाटा रजिस्टर पर, लाइक 300 पर मैं इसको मूव कर दूंगा। 300 पर हमारे पास ये डाटा मूव होगा फर्स्ट वन। अभी इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ एंड आपको मैं एज ए डेमो सिमुलेशन के थ्रू मैं शो करता हूँ। ओके, नो एरर। और देन मैं इसको सिमुलेशन मोड पर स्टार्ट करता हूँ। जस्ट वेट एंड सी। ओके, सिमुलेशन इज गोइंग ऑन, दैट्स गुड। Simulation has been completed, there is no errors. Okay, now just open buffer address only for monitor D300. There is no error, there is no data. And this side you also can first of all delete all data and here mentions D300. Now click start watching this window enables. Okay,
D300 पर भी हमारे पास डाटा नहीं है। अभी मैं आपको एंड एक इस चीज़ को आप यहाँ पर ट्रिगर करोगे लाइक ओके हमारे पास मशीन D300 में डाटा like this is integer value 16710 is the integer value and machine one is string value strings हमारे पास like for one characters need one byte data here you can check like only EMA is divided one for EMA need one data register like one byte means one character required only one byte here in one words is equal to bytes. That's why EMA is stored only in one data register. Second is SCH. So if you want to capture only CH, then how you can use and what instructions is required to retrieve only CH. So here basically just go to right monitors and click SM400. There are two methods. Only one. Simply click W word to byte instructions and directly you can convert like D300 350 how many data register you want to convert word to bytes like 20 just click align program change and click yes distribute okay 350 so just open another monitor window and simply click D355 okay here you can see these all character M, A, C, H are divided in one data separate data register like one byte register like D350 each one is stored only M, A, C, H like this types and another like there is a two methods like write instructions write instruction means ये सिर्फ राइट साइड से आपके डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा लाइक जैसे भी हमने यहाँ पर डालोगे आप 300 अपने यहाँ पर डाल दे जो भी फर्स्ट आपका सोर्स रहेगा सेकंड आपका डेस्टिनेशन मीन्स आप डाटा रजिस्टर को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं एंड अब हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डाटा रजिस्टर लाइक 1 2 3 लाइक अब जैसे मैं मुझे सिर्फ वो ओनली एन ई1 चाहिए तो मैं यहाँ पर इंटर करूँगा ओके एंड यहाँ पर भी मैं क्या यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा जब भी आपके पास first of all you need to check like D300 is not empty before execution these instructions please check then उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे D is not equal 0 D300 sorry 300 and before that just click M1X sorry M base this is memory bits and second instructions is
is right instruction, and the second is left. Like when you want to only MACH, only three characters, like right, left, simply click and define data registers, click, just then program change, click yes, just wait, okay. Now just you want it to be click 5, click on finish. Okay, that's check. You can check. The any one's right means right side से only three characters. Left left means left side से three characters. जो यानी फर्स्ट डाटा रजिस्टर आपका सोर्स जहाँ से आपको डाटा आना है, सेकंड जहाँ पर आप डाटा को सेव करना चाहते हो, एंड थर्ड this is a number of constant. यानी how many numbers you want to retrieve data from this data register. अब आप इसको डायरेक्टली एज ए कहीं अभी जैसे हम कहीं पर भी इंस्ट्रक्शन एज ए जब हमारे पास एम मीन्स जैसे M120 ऑफ हो, देन हमें D400 में हमें जीरो मूव करना है। फिर उसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे एफ मूव K0 D400 जस्ट क्लिक, सिंपली जैसे हम इसको ऑफ करोगे लाइक ऑल डाटा जीरो, लाइक D400 all data zero. Thank you guys.